Hello students, now we'll start the new topics with the new chapters, statistics, chapter number 4, measures of dispersion, measures of dispersion. We have studied the mean, median and mode. That's a central tendency. That's it's also useful in analysis all things. But this one is more important. So dispersions. What is dispersions? So first we'll understand the what is dispersions. So we can clear our concept, and for all the problems and all theoretical points we can easily understand. Disperse, it shows the spread of observation. Disperse means, in a simple language, it shows the spread of observations. Then how the observation of populations are spread over the averages or. So that's very simple. In our book also one example is given. The family is on the one side of the river and you want to cross the rivers, and it's give the average height of the family and the maximum depth of the river. What happens? Suppose you have the knowledge only the knowledge of average. You think that the river is start, for example, that is the, it's a river. And this side, that is the family, mother, father, son and daughter, and they want to cross the river. So the average height of the family की average height हमने 120 कर ली है, 160 और 165 whatever. यहाँ पे 120, 140, or 60. So the average height of the family is 125. How? The sum of the height 160 plus 140, 300 plus 90, 390 plus 60, 450. 450 divided by 4 कर लो तो average height हो जाएगी 125. और समझ लो कि simply the average height of the river also 120. यहाँ से मीन्स कॉर्नर पर बहुत ही लाइक के डेप्थ कम है, डोलियन वैल्यू जैसे मिडल में जा रहे हो तो ये इसकी डेप्थ आ रही है और वापस वो ये सिचुएशन है उसका, ये लेवल समझिए, उसकी डेप्थ ऐसी है. तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे चलना, तो मीन्स ये पर्सन मीन्स यहाँ तक रुकेगा, फिर और थोड़ा आगे जाएगा तो फिर ये यहाँ पे पहुँचने वाला है, और थोड़ा आगे गया तो फिर यहाँ पे पहुँचेगा, और आगे गया तो फिर वो संकेत होगा, पानी में डूब जाएगा. दैट इज द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है. और 160 है तो वो पास आउट हो रहा है, बट दैट्स फैमिली मेंबर 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, और ये फॉर एग्जांपल की डेप्थ उससे भी मैं ज्यादा ले लूं कि 200 सेंटीमीटर है, तो ऑल मेंबर्स विल बी सर्व एट द मिडल ऑफ, सभी लोग यहाँ पे मींस पानी में क्या होगा, डूब जाएंगे. सो दिस इज द पॉइंट why we need to understand the dispersions. Why we need to understand or study the dispersions. It shows the dispersions of the average value, okay, but average की means दोनों साइड, average यहाँ पे मिल गया तो मिल गई average, but average के दोनों साइड पर उसकी observations और कितने ज़्यादा spread है वो study करने के लिए we need the dispersions. So this one is what, suppose we have the idea that dispersions is a little bit more and then 182 यहाँ पे
is there, so we will not try to cross the rivers. So we have idea of dispersions, means हमें knowledge होना चाहिए dispersions, so it will helpful to take some important decisions or for analysis or for the research. So this one is also the important chapters. Again मैं repeat कर रहा हूँ, disperse का मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन से अब अगेन स्टार्ट करते हैं. और एक कॉन्सेप्ट बुक में मीन्स है हमारे पास, टेक्स्ट बुक में वो भी सेम दिया हुआ है कि कंपनीज के प्रॉफिट है, एक कंपनी कांस्टेंट है, एक कंपनी का फ्लक्चुएट हो रहा है और एक इट्स हाईली फ्लक्चुएटेड है, और फिर ये तीनों कंपनी की एवरेज से हमारे तीनों कंपनी की एवरेज वैल्यू शेयर है. बट एवरेज वैल्यू से सिर्फ डिसीजन हम नहीं कर सकते हैं, मीन्स उसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है. तो चेक की कंसिस्टेंसी आल्सो वी कैन से वी मेक द डिस्पर्शंस. द डिस्पर्शंस इज वेरी लो. जितना डिस्पर्शंस कम होगा इट शोज द मोर स्टेबिलिटी ऑफ द फर्म और कंपनी और व्हाटएवर, एंड इट इज कंसीडर्ड एज अ better. Now we'll see the dispersions. A measure which shows how far the observations, a measure which shows how far the observations are spreaded. The observations, how far the observation is spreaded means यानी कितने वो स्प्रेड हुए हैं वो तुम्हें चेक करना है. Observations of data are scattered from the measure of center. Then spread or scattered observations of the data. Observations of the data are spread. It means scattered. तुम्हारे जो ऑब्जर्वेशन है वो कितने स्प्रेड हो चुके हैं, इट्स स्कैटर्ड फ्रॉम द मेजर ऑफ एवरेज, फ्रॉम द measure of average. Not average that means x bar, that's maybe the positional average is there, arithmetic average is there. Any average means average को हम कंसीडर कर रहे हैं डिपेंड ऑन आवर स्टडी. तो मैं किस चीज का रिसर्च करना है उस पर डिपेंड कर रहा है कि which average you consider the arithmetic or you consider the positional average, it's depend on you. Now is average is terms as dispersion, is terms as dispersion. अगेन डेफिनेशन को अच्छे से एक बार समझ लो. दैट सिस्टम हैज अ dispersions. Now we'll see what happen. See the definition. A measure which shows how far the observations, यानी तुम्हारे जो टोटल ऑब्जर्वेशंस ऑफ डेटा, यानी जो डेटा तुम्हारे पास है वो डेटा के सभी ऑब्जर्वेशंस तुम्हारी एवरेज वैल्यू से, चाहे वो अरिथमेटिक को, अभी मैं एवरेज वैल्यू एक्स बार ले लूं, यानी पोजीशनल एवरेज कोई भी ले सकते हैं, d1 d2 या q1 q3 के, तो तुम्हारी जो एवरेज वैल्यू है मीन मीडियन मोड, वहां से मींस तो कितने स्प्रेड है वो चेक करना है. स्प्रेडेड स्कैटर्ड फ्रॉम द मेजर ऑफ एवरेज, यानी तुम्हारी एवरेज से वो कितने स्प्रेड है इन द टर्म्स ऑफ डिस्पर्शन, यानी डिस्पर्स कितने हो गए, तो वो स्टडी करना है. सो अब तक मींस in central tendency we discuss the only average. Now we'll discuss the spread of the data. From the average से वो कितने spread है, exact particular कोई एक value तो possible है नहीं, only the one value for all the data is not possible. So we make the conclusion that average value shows that the observation is nearby the particular value. कोई particular value के near सब observation से वो हमने central tendency में decide किया. सपोज के 10 स्टूडेंट्स हैं और एक टेस्ट कंडक्ट हुआ तो सभी के इक्वल मार्क्स तो पॉसिबल नहीं है, किसी के 3 4 है, किसी के 7 8 है, बट हमने ये सबका एडिशन करके डिवाइड कर लिया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो एक एवरेज वैल्यू मिल रही है. एक एवरेज वैल्यू यानी कि अप्रोक्सीमेट सभी मींस 5 के नियर बाय है. सो हमने कंसीडर कर लिया कि एवरेज 5 हो रहा है, तो 5 मींस एक पर्टिकुलर एवरेज वैल्यू मिल रही है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, बट हमने कंक्लूजन निकाला कि मींस 5 के अराउंड सब ऑब्जर्वेशंस है, दैट इज एवरेज. बट अब स्प्रेड देखना है कि 5 तो है बट यहाँ पे 9 भी है, यहाँ पे 2 भी है,
तो ये ऑब्जर्वेशन और कितने स्प्रेड है फ्रॉम द एवरेज से मींस वो कितना स्प्रेड हुआ है वो भी हमें चेक करना है। तो इट शोज द और वी कैन learn in a dispersons और it shows the dispersons of the data और scatter कितने spread है from average we learn in this chapter। that's very simple। so concept एक बार clear हो तो easy हो जाएगा हमें समझना। now we'll discuss in detail the degree of which समझ लेना उसकी मीन्स यानी कि definition given by the statisticians Spiegels the degree of which the numerical data तो numbers यानी कि जो हमने collection किया है data tends to spread about यानी spread कितने हो रहे हैं tend to spread about an average से वो कितने spread हो रहे हैं average value is called variation or dispersions of data that is called variation or dispersions। वेरिएशन और डिस्पर्शन अच्छे से समझ लेना कितना वेरीज हो रहा है। वेरी से वेरिएशन हुआ है वेरी यानी चेंजेस द न्यू वेरिएबल वेरी दैट मींस चेंजेस फ्रॉम द एनी अदर। तो वेरिएशन यानी कितना चेंज मींस उससे कितना डिफरेंस यानी तक स्प्रेड हुआ है तो दैट इज कॉल्ड अ वेरिएशन और डिस्पर्शन। सो इट शोज द मेजर ऑफ दैट्स अ डिग्री ऑफ the degree of which numerical data tends to spread about an average से कितना spread हो रहा है it shows the variation or dispersion। so in these chapters we consider the dispersions of the data and we'll study the points कौन से स्टडी करने वाले वो आज डिस्कस करेंगे and then we'll start from our next lecture one by one। तो what is the characteristics उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो डिस्कस करने वाले हैं थियरिकल पोर्शन में उतना भी मींस नहीं है वो बट द कॉन्सेप्ट अबाउट द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर्स दैट इज द पॉइंट ऑफ मेन जो पॉइंट है उसके एब्सोल्यूट मेजर क्या है और रिलेटिव मेजर क्या है ये दो पॉइंट्स स्टेट में मैक्सिमम सभी चैप्टर्स में यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंस पॉइंट आएंगे जैसे कि तुम 12th की बात करो तो इंडेक्स नंबर में चले जाओ कोरिलेशन में चले जाओ रिग्रेशन में चले जाओ टाइम सीरीज में चले जाओ देन बहुत सारे चैप्टर्स में ये पॉइंट्स आने वाले हैं। तो वहां पे भी वापस प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो कि व्हाट इज एब्सोल्यूट एंड व्हाट इज रिलेटिव वो अच्छे से समझना है उनसे कॉन्सेप्ट को समझना है। सो नाउ द एब्सोल्यूट मेजर क्या है तो एब्सोल्यूट मेजर तो दिस a measure of dispersions there is the one type of dispersions measure of dispersions which is expressed in the same unit जिसको हम same unit में ही measure कर रहे हैं which the observation of the data are expressed is called an absolute measures। in the simple terms जिस observation के data यानी कि जो observations है हमारे data वो same unit हो और सेम यूनिट के डेटा को जब हम मेजर कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मेजर। और इन सिंपल वर्ड जैसे एब्सोल्यूट मेजर शोज द डिफरेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस कि उनका डिफरेंस कितना है एंड देन रिलेटिव मेजर शोज द रेशियो ऑफ द ऑब्जर्वेशंस in a ratio form and we can measure the different unit of the data the observation of or we can say the observation having the different unit of the data can be measured with the help of relative measures से जिस मेजर से हम यानी कि this is the measurement in which the observation of the data the collection of data or observation of the data having the different unit can be measured it is known as relative measures because we converted it into the relative और फ्रैक्शन मींस रेशियो में उसे कन्वर्ट करके फिर डिफरेंट यूनिट जैसे कि हाइट इन सेंटीमीटर है और तुम्हारा वेट किलोग्राम में है किलोग्राम और लीटर को तुम करने जा रहे हो तो दिस इज द डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड डिफरेंट यूनिट को भी आप मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव मेजर्स so in simple words we can say
The absolute measure is the measure of SAM unit. Absolute is the measure of SAM unit, and the comparison of the measure of SAM unit, and the relative measure is the comparison or the measurement of the different unit. Different unit को यहाँ पे हम measure कर सकते हैं with the help of relative measures. So this is the measures, absolute and relative measures. Now different unit cannot be measured with the help of absolute measures. एक बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, so ये क्वेश्चंस तुम्हें क्लियर करने हैं. Now our last point जो है, which points we'll study in this chapter. So this is the different type of values are there. Measure of dispersions. We will study the following things. Range. We know very well range is the limit of the data to extreme limits, and the total the higher में से lower को डिडक्ट करके total means कितना spread है. Total means वो हमें पता चल रहा है scatter with the help of range. So we will find the range and coefficient of range. That's an absolute measure and it's a relative measure. So we can say the relative range